अहमदाबाद में कौन सा ग्रुप है? अहमदाबाद में वो ग्रुप जाके इकट्ठा हुआ जिनको खाने पीने में मजा नहीं आया खिचड़ी खाने में। Which group gathered there in Ahmedabad? The group that didn't enjoy the food and drink, that is eating khichdi, gathered there. Khichdi is a dish prepared with rice and pulses. दशरथ पटेल भी इसी बात से टूटे हैं। जब हम इतना पैसा देते हैं यज्ञ में, तो आप इतना सादा भोजन हमें क्यों खिलाते जो हमारा लड़का यहाँ रहना ही नहीं चाहता, आना ही नहीं चाहता। Dashrath Patel also broke away because of this very reason. He said, "When I give so much of money in the yajna, why do you feed us such simple food that my son doesn't want to stay or come here at all?" अब बताओ, 500 करोड़ मनुष्यात्माओं का बाप होगा कोई, तो 500 करोड़ बच्चों के लिए सोचेगा या थोड़े बच्चों के लिए सोचेगा? Now tell me, if someone is the father of the 5 billion human souls, will he think about all the 5 billion children, or will he think about a few people? फिर वो तो जगन्नाथ है। Student, for the 5 billion children, then he is Jagannath after all. सारे जगत का नाथ है। He is the Lord of the entire world. तो दाल चावल ही खिलाएगा। जाओ देख लो जाके भक्ति मार्ग में भी वही परंपरा चल रही है। He will certainly feed dal and rice. You can go and see in the path of bhakti. The same tradition is going on even now. वहाँ चावल का अंडा चढ़ता है, तो दाल बनती है या तो कढ़ी बनती है। A large pot of rice is put on the stuff there. Either dal or kadhi, that is curry, is cooked there. हम गुरुद्वारों में भी गए, देखा हमने, बहुत सादा है। Student comments. I have also been to Gurudwaras. I saw the food there is very simple. सिर्फ दाल रोटी, दाल रोटी, तो ज्यादा चक्कर नहीं है। कुछ नहीं, दाल मिष्ठान मेवा नहीं दिया जाता ब्रह्मकुमारियों में। There is just dal and roti. That's it. There isn't much variety. Sweet dishes and dry fruits aren't served like in the Brahma Kumaris. माँ की दाल, सूखी रोटी। तो वो लोग जो वहाँ असंतुष्ट रहे कंपिल में या फरुखाबाद में, वो जाके दशरथ पटेल के यहाँ पूरी खीर पूरी खा करके मस्त हो गए। Student, dal and dry roti. That's it. So, the people who were dissatisfied there in Kampil and Farrukhabad, they went to Dashrath Patel and became very delighted by having kheer and puri there. Kheer is a sweet dish prepared by boiling a particular eatable like rice etc. with milk and sugar. बस हो गया ज्ञान इतने। That's it. That's all there is to their knowledge.